Welcome students, it's Mr. Maruti, your physics teacher, and this is the first video based on chapter electricity, which is the first chapter in physics for your class. In this video we will study about electric charge. This electric charge is denoted by Q, either capital or small, it depends upon U, which is given by Q is equal to NA, where this Q is charge, N is an integer, and E is electronic charge or basic charge, or you can say it as fundamental charge. All have the same meaning. Dear students, this E is, which is called electronic charge, is having some values but fixed. Its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. When it is having positive sign, then it is for 1 proton, and when it is having negative sign, then it is for 1 electron. Means for 1 proton the value for E is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and that for 1 electron its value is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Electric charge is a physical quantity which produces electric field at rest. Means when a charge is at rest, then it produces electric field. And about electric field you have to study in higher classes. Now, there is a numerical based on this formula. The question is, calculate the number of electrons constituting minus 1 coulomb of charge. Means in this question we have to calculate that how many electrons can constitute minus 1 coulomb of charge. That is, the value for charge, which is denoted by Q, is given minus 1 coulomb, and we have to calculate the number of electrons. So we have the formula Q is equal to NE. The value for Q is given minus 1. Here this is the value for charge. Q is equal to minus 1. N is to be calculated, so we have to write it as it is. And the value for E should be written as minus 1.6 into 10 to the power minus 19. As I have told you that the value for 1 electron, that is the E, is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The basic charge has two values, one plus something and another one minus something. Plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is for 1 proton, and minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is for 1 electron. Here we have to find out the number of electron, so the value for E should be written as minus 1.6 into 10 to the power minus 19, not as plus. Now this minus and minus sign will be cancelled out, leaving behind 1 is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. N is equal to 1 divided by this one. When this term will be transposed to RHS, then this is equal to N is equal to 10 by 1.6 into 10 to the power minus 19. Now see here, this value is already in RHS, so it is transposed here in this side. So we can write here N is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Now this decimal is eliminated out, then we can write here 0. Now this is 10 by 16 into 10 to the power 10 to the power 19. Now if you will solve it out, then you will get this value, N is equal to 6.25 into 10 to the power 18. Dear students, ये फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे और Q इज इक्वल टू NE होता है. एक प्रोटॉन के लिए E का वैल्यू है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम, तो वहीं एक इलेक्ट्रॉन के लिए E का वैल्यू है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम. हम यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखें कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी which produces electric field at rest. इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब वो रेस्ट में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ना है. क्वेश्चन हम जो दिए यहाँ वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग माइनस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज.
Q इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। Q के जगह पे -1 रखेंगे क्योंकि दिया है -1 कूलम, और N यही यहाँ पर हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। E का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे, यहाँ ये फिक्स्ड होता है। अगर हमको प्रोटॉन कैलकुलेट करना रहता, प्रोटॉन का नंबर, तो ये माइनस नहीं लिखते, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, तो ये टर्म अब 1 की तरफ आया, तो ये बन गया क्या, N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पॉइंट को हम हटाए तो यहाँ 0 आ गया, अब ये बन गया 10 बाई इतना। तो ध्यान दीजिए 10⁻⁻19 को हम न्यूमरेटर में ले गए, तो ये बन गया 10⁻+19। 10/16 को हम 100/16 लिखें, तो इस 10⁻19 को 10⁻18 कर दिया। ध्यान दीजिए अगर हम इस 100 इंटू 10⁻18 को सॉल्व करें तो वही आंसर आएगा जो 10 इंटू 10⁻19 को सॉल्व करने पर आएगा। तो यहाँ 100/16 को सॉल्व कीजिएगा, आप डिवाइड कीजिएगा 16 से 100 को, तो ये आएगा 16 6 जा 96, 4.0, 16 2 जा 32 and 16 5 जा 80. It is 6.25. So 100/16 is 6.25 and into 10⁻18. This is our answer. Thank you students. ये फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड। पहले भी ये अपलोड हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश ये डिलीट हो चुका था, ये मैंने फिर से वापस डाला है।